आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट हम लोग कुछ रिवाइज कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द curved or straight imaginary lines in an electric field such that the tangent at any point can give the direction of the electric field। किसी भी जगह पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें वहाँ उसका डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। Electric field lines, that means these are the pictorial representation of electric fields. Electric field lines is the electric field lines are the pictorial representation of pictorial representation of electric field. Electric field के पे these are very important to electric field। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज, हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में देखेंगे, फिर देन नेगेटिव चार्ज एंड देन फिर दो इक्वल चार्जेस के बारे में देखेंगे एंड देन इक्वल चार्जेस में भी अगर चार्जेस अनइक्वल हो सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस में तो फिर क्या होगा, और फिर दो अनइक्वल चार्जेस के बारे में क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगे वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड, if q charge is given to the sphere, if we place a unit positive charge in the space around the charge plus q, it will experience a repulsive force radically outward। मतलब radically outward direction की ओर repulsive force जो है हमारा दिखाई पड़ता है। The arrows indicates, these are arrows indicates the intensity of electric field। intensity of electric field को ये present करता है of plus q charge at different points। The size of any arrow is the proportional to the intensity of electric field। जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इसके इक्विवेलेंट हम लोग इस डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस एरो साइन। दीज आर द दिस इज द फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली जस्ट इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन की ओर हमारा नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। नाउ इफ देर आर टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस टुगेदर सर्टेन डिस्टेंस के बीच में, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें भी आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर भी है, लेकिन इस दोनों के बीच में मिड पॉइंट में एक न्यूट्रल चार्ज होगा। एन इज द मिड पॉइंट इफ बोथ आर इक्वल चार्ज। तो ये एन पॉइंट जो होगा दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे होगा। बट इफ समहाउ दोनों चार्ज में से एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन अगर एक चार्ज बड़ा हो और एक चार्ज छोटा हो, देन दिस मिड पॉइंट इज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज के ज्यादा क्लोज में होगा। ये दो इसके बीच में डिफरेंस है न्यूट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम लोग आगे के क्लासेस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केसेस में पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज में ये टर्मिनेट होंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए होगा। नाउ नेक्स्ट फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसे पैरेलल लाइन से ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस। ओके, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, दे आर इक्विडिस्टेंस एज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दे आर डिफरेंट स्ट्रेंथ एट डिफरेंट पोजिशन। दिस इज एन आइसोलेटेड चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर रेडियली एंड नॉन रेडियली नॉन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे नॉन पैरेलल टू ईच अदर। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। शॉर्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ electric field lines। Okay, the first property is this is electric field lines
begins from positive, begins from positive charge and terminate or end, terminate or end on negative charge. Okay. Number two, electric fields are imaginary lines where, but they represent the pictorial representation of electric field, which is unreal. So electric field lines, electric field lines are imaginary. Okay. Number थ्री, द tangent, ये सबसे important है, the tangent at any point on an electric field lines gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डायरेक्शन को शो करता है। कहीं पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, नंबर फोर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक, हम लोगों ने अभी ऊपर में जितने भी देखे कहीं पर भी ऐसा नहीं है। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस each other. Okay, the number of lines per unit, ये भी important है, the number of lines per unit cross sectional area perpendicular to the field lines, that is इसको हम लोग कहते हैं density of the lines of force is proportional to the magnitude of intensity, magnitude of intensity of electric field in that region, so they are number 6, electric field lines do not form closed loop ये नहीं बनाता है closed loops. Okay, number 7, the electric field lines contract, electric field lines contract lengthwise to represent the attraction, of two unlike charges, and they are exert lateral pressure, that is side by direction on each other to represent repulsion. Okay, number 9, electric field lines are not allowed to pass through conductor, not allowed
to pass through conductor, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर जो है वो जीरो होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर allowed to pass through non-conductor और डायलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर से ये पास हो जाता है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड हमारे प्रॉपर्टीज हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम, हम लोग डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसके